Hi, welcome to this Market Watch edition at the end of the 18th of October. So going forward, मैं इस वीकेंड में मैं और जितने भी FNO स्टॉक्स है उसको मैं अल्फाबेटिकली डिस्कस किया था और वो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी या आप अपर राइट हैंड कॉर्नर आई बटन में क्लिक करने से भी आपको मिल जाएगी. गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे हम सिर्फ कुछ ऐसे ट्रेड्स देखेंगे जिसको हम लेने की सोच रहे हैं. और जो ट्रेड्स हमारे टारगेट्स को अचीव किए हैं. सो वन ऑफ देम वाज IRCTC. ये हमारा 6000 का टारगेट था. दिस टारगेट वी वर डिस्कसिंग जब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी. और गोइंग फॉरवर्ड अभी भी इसमें मोमेंटम है एंड मे बी वी विल सी समथिंग गुड. आज बहुत सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई बनाए हैं और बहुत सारे वो स्टॉक्स हम वीकेंड में डिस्कस किए थे जैसे और 52 वीक हाई बनाए हैं जैसे हिंडाल्को ने बनाया. सिमिलरली टाटा पावर ने बनाया. वेदांता भी बहुत अच्छी एक मूव दी है टुडे. Also NATIONALUM also made a 52 week high. So there were a lot of stocks. Dixon also made an all time high. Aarti industry बहुत अच्छी consolidate कर रही थी and we talked about 1200 is coming and this is exactly what happened. INFY also gave a good move and the good thing is हम INFY में बोले थे कि 1750 जब भी ये breach करेगी we will be creating our positions. That's what we did और वो 1800 तक गई है. Going forward we can see there can be much move follow up. इसके अलावा सेल भी इसमें ये है सेल भी अच्छी तरीके से चल रही है और गोइंग फॉरवर्ड वी मे बी सीइंग सम अदर इंटरेस्टिंग ट्रेड्स which might come in. So one of the things is emphasis. Also you can see this is more in a box. हम mid cap IT में हम थोड़ा सा अपना फोकस करेंगे and also भेल gave us a good move. Similarly you can see HAL भी आज all time high बनाई and ये हमने weekend में ही डिस्कस किया था and we also discussed it yesterday. So 1500 के ऊपर ये एक अच्छी move दी and there was some profit booking. टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छी कंसोलिडेट कर रही है. कल हमने टाटा स्टील की बात की थी वो भी आज 1400 के ऊपर एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है and going forward we are expecting some more up moves to come in. ICICI बैंक ये हमने स्ट्रेटजी बनाई थी कि 725 के ऊपर ये जब भी क्लोजिंग देगी वी विल बी एडिंग पोजीशंस एंड नाउ यू नो टुडे इट वेंट टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ 750 एंड गोइंग फॉरवर्ड देयर इज डेफिनेटली अ गुड फॉलो अप गोइंग टू कम इन. कैनरा बैंक भी 200 में अच्छी एक अचीव की. ऑल्सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 500 अचीव की एंड देयर आर मच हायर टारगेट्स विच आर गोइंग टू कम इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आई एम स्टिल कैरिंग ऑल द पोजीशंस. एस्कॉर्ट्स हमने बहुत सारे दिनों से हम ये डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अ लेवल ऑफ 1600 इन द नियर टर्म. दिस इज वेरी नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई एंड गोइंग फॉरवर्ड आई एम एक्सपेक्टिंग अ रियली गुड मूव हियर. ITC भी हमने 238 में यहाँ पे ऐड किया था एंड देन अगेन हम 250 के ऊपर ऐड किए थे. आज ये फिर 52 वीक हाई बनाई. सो दैट्स आल्सो अ गुड ट्रेड. मारुति भी हमने कल डिस्कस किया था एक्सप्लिसिटली एंड हियर यू कैन सी मारुति 7500 से अच्छी रिवर्सल देके नाउ आवर टारगेट इज मोर टुवर्ड्स लेवल्स ऑफ 8000. एस्ट्रल भी इज वेरी नियर टू इट्स ऑल टाइम हाई. 2430 2440 इस रीजन में इसकी ऑल टाइम हाई है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 2500 इन द वेरी नियर फ्यूचर. एक्सिस बैंक भी एक अच्छी मूव दी है. सो आज इन जनरल देयर वर लॉट ऑफ ऑल टाइम हाईज व्हिच वर बीइंग मेड. जस्ट लाइक LTTS भी हमने यहाँ पे अपना पोजीशंस बनाया था एंड वी वर टारगेटिंग 5000. यू कैन सी इट्स मेकिंग हाईज हाई लोज एंड वन ऑफ दीज डेज ये 5000 को भी 5000 को भी ब्रीच करके ये इट विल फ्लाई. इट विल कम आउट ऑफ दिस बैंड. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फैंटास्टिक कंसोलिडेशन 500 गई है. देयर इज मच हायर टारगेट्स. हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टारगेट्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे. टाइटन भी आज ऑल टाइम हाई बनाई. वेरी नाइस कंसोलिडेशन इज हैपनिंग. देयर लॉट ऑफ पोजीशंस गेटिंग एडेड एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड देयर कैन बी अ गुड मूव. हमने DLF के पोजीशंस कल डिस्कस किए थे. ये भी आज 450 तक गई थी. And going forward हमने बोला था कि though we don't trade but these are very good structures from a technical point of view. जिंदाल स्टील also went towards 450. ये भी हमने कल डिस्कस किया था. बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व both of them made all time high today and they opened at all time high and we were able to book our profits for 2 lots in Bajaj Finance. So this is also going good.
TCS is also trying to get to support at 3600. Tata Chem also made an all-time high. So there are a lot of good trades which are happening in this particular market, and there is still a lot of trades which have to be taken off. ABFRL भी 250 के ऊपर ये consolidate कर रही थी, and now it's shifting towards 300. ये भी बहुत strong दिख रही है. मन्नापुरम finally made 200. ये हमने कल डिस्कस किए थे, and we were carrying these positions from these days, जहाँ पे हम 200 का टारगेट लेकर चल रहे थे, and we were just shy of 200 over here, and today it actually breached 200. So we got our target. IEX fantastic consolidation हो रही है, and one of these days this is going to blast. And from a target perspective, definitely 1950 seems like a very good target for now. Mindtree also fantastic consolidation at all-time high. You can see yesterday बहुत अच्छी एक मूव आई थी after the result, and today it was just slightly consolidating. This should be in your radar, and maybe one of these days it will also showcase something. PI Industries हमने 3200 के ऊपर हमने यहाँ पे positions बनाए थे when it entered, and then we told that we are going to explicitly add more when 3400 के ऊपर closing देगी. Today it went towards 3400 where we booked our positions, and now we are just waiting for the next move. अगर ये 3400 को breach कर पाती है तो. NAM India भी it also made an all-time high. We have been talking about NAM India. Naukri also is very near to its all-time high. 7000 regions को ये hold कर पा रही है. Canfin also is at all-time high. So PVR also made an all-time high. So these UPL is also this is a very nice consolidation which is happening in UPL as well as in Balakrishna Industries. These are very good trades which can be participated also in Page Industries. बहुत अच्छी एक move है. Muthoot Finance हम 1600 का टारगेट ले रहे हैं. You can see it's making higher lows, and this is a really good trend. Reliance हमने 2442, 2738, 2742 इस regions में हमने अपना profit book कर लिया था, जो भी हमें intraday या short term के लिए था, and then we are going to add more tomorrow going forward. Definitely it looks really good, but you have to understand it's very near to its टेक्निकल टारगेट, और वो टारगेट हमने इन दिनों में डिस्कस किया था. So from 2400 levels we came to our target of 2750 levels. So you have to be cautious, but given the momentum of the market it can very well overshoot, और ये अगर overshoot करेगी so the scenario would be very similar to the ones which we saw in companies like IEX, जिसमें 766 was the technical target, but right now it's trading at 810 levels. Similarly TATAPOWER. So these are टेक्निकल टारगेट्स एक चीज़ होती है जो आप एक मैथमेटिकल मॉडल होती है, लेकिन देन आफ्टर दैट अगर मार्केट वांट्स टू गिव प्रीमियम देन यू कैन सी दिस मूव्स. ट्रेंड आल्सो फैंटास्टिक अप मूव एंड फैंटास्टिक कंसोलिडेशन इज हैपनिंग. सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच यू कैन सी देयर इज अ लॉट ऑफ trading opportunities. You just have to be in the right trades and in the right sector. Bata India भी also made an all-time high. हमारे 2200 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है. Today it went towards 2180, and I think going forward ये 2200 would be achievable. Hind Petro में हमारा 333 का टारगेट था which was achieved here, but still you can see it's ongoing and it's going towards levels of 340. HDFC भी एक you can see it's in a range, and so 2850 अगर reach करेगी this will go much higher. Similarly, Grossim also made an all-time high at 1800 levels. Godrej Properties also very nice consolidation is happening, और इसको आप radar पे रखो, within 2-3 days it can blast. And similarly, Kotak Bank also was able to hold the 2000 levels. हमने इन दिनों में consolidate जब कर रही थी, we said 2000 is a very interesting level. Going forward, there is a lot of scope of this to move forward. Also, L&T is very nicely consolidating. Bharat Forge, this is sort of facing resistance, and today it closed round about at 800 levels. This is something which is of interest to us, क्योंकि 800 बहुत ही crucial एक level है, and we knew it won't be able to breach it in the first go, but let's see what comes out of it. I am still very much bullish on Bharat Forge. Tata Consumer, so Adani also आज ये अच्छी एक का मूव दी थी, एंड इट ऑल्सो गिव अ गुड मूव इन द थर्सडे. 800 के ऊपर क्लोजिंग आई थी. सो हियर वी विल बी स्टार्ट टू ट्रैक 800 को यहाँ पे किस तरह से ये कंसोलिडेट करती है. मैकडबल ऑल्सो is nicely consolidating at 900 levels. So these are there. So Jubilant Food also made an all-time high today at the opening. So 4500 levels. So there is
नाइस कंसोलिडेशन विच इज हैपनिंग। एक्साइड इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी ये एक रेंज बाउंड है। सो वंस वी गेट अ क्लोजिंग अबव 190 देन इन नो टाइम इट विल बी मोर गोइंग टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 200। So Divi's Lab also 5300 का जब ये breach की थी on this particular day, we had positions and now you can see it's inching towards 5500. Also HDFC Bank after the result it gave a good move towards 16 17 25 levels, and this was very much evident from the way this positions were getting created over here. You can see this was more higher lows and then there was a good move. So of course it was 1700 के ऊपर ये फिर से जाने वाली है, and there is absolutely nothing to worry if you're carrying your positions. Supply is also more in a tight box, so let's see. OFSS also is more in a box. हम 5000 के ऊपर ट्रैक करेंगे. दीपक नाइट्राइट also is very near to its all-time high. Very nice consolidation. One of these days this is also going to give a move, just like Aarti gave today. So there are a lot of Navin Fluorine ये 4000 moves की एक resistance है. I think I would suggest that don't enter Navin Fluorine until and unless you see a closing above the levels of 4200. And for now, if you are interested in the chemical sector, you have much better companies like SRF after the split, and also you have this Deepak Nitrite, so and Aarti Industries. Bajaj Auto 4000 के ऊपर closing would be of interest to us. जब तक वो नहीं आती है, we won't be tracking it for now. And also two of my other favorite companies, L&T Finance Housing is going really good. Cholafin भी आज बहुत अच्छी एक 610 तक की मूव दी थी, and its all time high is at 620. So keep that in mind and keep that. So we are trading it. We are creating positions and we are booking at 609 610 levels, and going forward अगर ये all time high के ऊपर breakout देती है, we will be again taking part in this. Similarly, M&M is also trying to get some support at 900 levels. It gave a good move from 800 onwards, or we are just waiting for some reversal. This is definitely one of the trades which we are waiting for. Polycap भी 2600 के ऊपर, one of these days it will blast, and you have to keep that in mind. And also MCX also very near to its all-time high, and there's a nice consolidation ongoing, so you have to keep this in mind that one of these days ये बहुत अच्छी move देगी. And from a target perspective you can expect 2400s. Amraja Battery also जब तक 800 के ऊपर closing नहीं आती, we won't be making our positions. LTI also there were a lot of positions added, and you can see 6000 was breached on a closing basis, so the result came out. Let's see how the market reacts to the result. So in general there are a lot of trades, and also you have to make sure that just like Pidilite also fantastic consolidation, 2500 के ऊपर closing there, all time high closing आ रही है, and so these are a few of the trades which you should not be missing out. You can see throughout this all multiple sessions is making higher lows, higher highs, so definitely these are very good prime candidates for a new all-time high breakouts, and this should be the trades which should be in your radar. Thanks a lot for listening of this video about all the FNO stocks which I am interested in. Give you an idea of where we stand and what are the trades we are going to take tomorrow. From a data perspective, definitely there are a lot of movement which is happening in the steel sector, so definitely one of those sectors, and especially for me, Tata Steel and JSW Steel are two very good companies which I am more interested in for tracking in the short term. Thanks a lot for listening. Bye bye.